Yeah, guys, just let me know is my voice clear. Guys, please let me know is my voice is clear. Guys, please let's go. Is my voice clear, guys? Yes, sir. Okay, it's the best response. Okay, so in last session, what we have discussed is we are discussing operators. So how many operators we have completed? We have completed arithmetic operators, we have completed comparison operator, and we have completed assignment operator. So these three operators we have discussed in last session. Now in today's session, we are going to follow membership operator, identity operator, logical operator, and then operator precedence. So these are things that we are going to discuss in today's session. So before understanding membership operator, let me discuss one more thing, that is containers in Python. So basically containers means the data types which are holding more than one values at a time, which are holding more than one values at a time are known as containers. What is containers? The data types which are holding more than one values, more than one values at a is known as. Now we have already discussed the data types. So coming to the integer, is integer is a container? The answer is no. The reason is int is your one value. If I'm writing a is equal to 10, a is equal to 10 means we are holding one value. So one value is never be a container. More than one values. So if more than one values are there, then it is going to be known as a container. So what are the data types which are holding more than one values? That is your. Then we are having tuples. Then we are having strings. Then we are having set. Then we are having dictionary. So these data types are generally known as containers. Why these are known as containers? Because all these data types are able to store more than one values at a time, more than one values. That's why these are known as containers. Now, why am explaining this container? Because our next operator, that is our membership operator. Membership operator will work with containers. With containers. Now, what membership operator is doing? So basically, membership operator is used to check whether a given element, whatever element you have given, so that element is a part of the container or whether that element is a member of the given container. If it is a member, you will get result as true. If it is not a member, you will get result as false. So membership operator means यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि मैं चेक कर रहा हूं कि जो भी एलिमेंट है वो उस सीक्वेंस या कंटेनर के अंदर है या नहीं. अगर होगा तो हमको ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगा तो हमको फॉल्स. तो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. दिस ऑपरेटर विल रिटर्न दिस ऑपरेटर will always return result in the form of boolean. That means that means your result will always be either true or false. True or false. Only two possibilities are there in this. Either it will be true or it will be false. The result is either true or false. Only two results you will get in this. Or now what this is doing, this operator basically check whether whether a given element is a member of the container of the container or okay. If it is a container, if it is a member, you will get answer as true. If it is not a container, you will get answer as false. Now,
two types of membership operators are there. First is known as in operator. Second is known as not in. In operator and not in. Coming to the in operator, basically what this in operator is doing, this operator will return, this operator will check whether a given element, whether a given element is present, is present in the given container. And if the element is present, then the result will be true. Then the result will be else result will be false. And the vice versa of this is your not in operator. So what not in operator will do? This will also check whether a given element is present or not. Now here, this operator will check whether a given element is present in the given container. Okay. And if the element is not present, then the result will be true, else the return result will be false. That is the Let me take few examples. I am writing x is equal to one list, something like 10, comma 20, comma 30, comma 50. This is my list. I am writing 10 in x. So what it is checking? It is checking whether 10 is a member of this container or not. Yes, 10 is a member of this container. So what is my result? True is my result. Okay. True is my result. Say, true is my result. Okay. So now what it is doing, this is my element and it is checking whether this element is present into your container or not. If it is present, your result will be true. If it is not present, your result will be false. Same as it is if I am having tuple like this. And I am writing something like 100. So 100 is a member of this tuple or not? 100 is not a member of this tuple. So your result will be false. And the vice versa of this your not in operator. What not in operator will do? If the given element is not present in X, then your result will be true. Else your result will be अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमें ट्रू मिलेगा अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें फॉल्स that is your membership operator. So two types of membership operator is there, in and not in. What in is doing? It is just checking whether a given element is present or not. If it is present, your result will be true, else your result will be false. What about not in? So this operator is also used to check whether a given element is present or not. If the given element is not present, then your result will be true, else your result will be false. So this is your membership. You can also use any sequence data type, like I am writing something like a string, hi, and I am writing h in x, h in x. See, result will be true because h is a part of the system. So it is just checking whether this element is a part of this container or not. Same as it is whether this h is a part of this string or not. Okay, so this is your membership. So if you want to ask anything in this, you can ask. Any question? Anybody? Any type of question? Naman, anything you want to ask? Is it clear, guys? Membership of it. Okay. Okay, so this is your membership operator. Same as it is, we are having one more operator that is known as identity operator. So what this identity operator basically doing? So identity operator is used to check for address comparison or memory location comparison.
or identity operator. So basically what this operator is doing, this operator is used to compare. This operator is used to check whether whether two variables are pointing to the same memory locations or not. Two variables are pointing to the same memory location or not. And if they both are pointing to the same memory location, if they both are pointing to the same memory location, the result will be the result will be else the result will be else the result will be. So what this is doing, so basically two types of identity operators are there. First is known as is operator and second is known as not is operator or is not operator. Is not operator. So what this is doing, suppose that I am creating two variables like x is equal to 10 and y is equal to 20. Now, whether these two variables are pointing to the same memory locations or not. If you want to compare whether this 20 memory location and 20 memory location and 10 memory location, both are pointing to same or not. So for that, we are having this is of. So how we can do it? We will simply write x is y. X is y. So what x is y doing? It is just checking whether 10 memory location and 20 memory locations both are same or both are different. So if it is same, your result will be true. If it is different, your result will be false. So if I am going to run this, your result is false. Why result is false? Because both the memory locations are different. So how you can get the memory location? For that, we are having one function named as ID. ID. So this ID function is there that is used to get the memory location. Let's see the memory location of both the variables. See, memory locations are different. So memory locations are different. That is the reason we are getting result as false. So if both the memory locations are same, your result will be true. So here in is operator, it is just comparing the memory location. Now here, what about is not? Is not is also similar to this. The only difference is it is just the reverse of them. So this operator is used to check whether two variables are pointing to the same memory locations or not. If they both are not pointing to the same memory location, the result will be true, else the result will be that is this. So if I can take one more example, suppose that I am having list 10, 20, 30. Y is equal to 10, 20, 30. Now, whether these two variables are pointing to the same memory locations or not, that is our requirement. So what I will do? First, I will check the memory locations of both the variables x and y, and then I will check whether both are pointing to the same memory locations or not. See, both the memory locations are different. That's why it is giving you answer as false. So basically, this is operator is checking whether these two variables are pointing to the same memory location or different memory location. So based on the memory location, you are getting result in case of identity of operator. So this is the thing. So one more thing, let me take is not. So if I am taking is not here, so in this case, your result will be true. See, why true? Because both the memory locations are different. दोनों मेमोरी लोकेशंस हमारी डिफरेंट है, इस वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इज नॉट यूज किया. इज नॉट मीन्स बोथ द मेमोरी लोकेशंस आर दैट्स. हाँ गाइस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ डाउट in this membership operator and identity operator? No question. Yeah, so clear. Any other doubt, questions? Okay. After this, we are having logical operator. Now, basically, logical operator means, so basically three types of logical operators are there in our Python programming. First type of logical operator is known as AND operator. Second is known as OR operator. And third is known as
not. So what is the meaning of these operators? Try to understand. If both the values are, if both the results are, if both the results are true, then result will be true. Then result will be, else result will be. What about or? So basically, logical or means if anyone, if any one result is true, if any one result is true, then the result is true. Else result is, then we are having not operator. Not operator means true means false and false means true means false and false means. See here, what is the meaning of this? Suppose that I am writing a is less than 10 or 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 a is greater than 20. And here I am giving value something like a is equal to 100. Now just, it is checking first condition. 100 is greater than 10. Yes, it is. So if any one result is true, so this result is true. So what is your overall result? What answer we will get here? The answer will be true. The answer will be true only because your first result is correct. So if any one result is true, your result is true. Okay. So in case of or, see. What about and operator? If same thing I am using with and, what it will be? 100 is greater than 10. 100 is greater than. So condition is true. So this condition is true. After this here, 100 is less than 20. Is 100 is less than 20? 100 जो है वो छोटा है 20 से, नहीं छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स। तो इस केस में क्या होगा, अगर दोनों रिजल्ट ट्रू है तब रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये तो हमारा ट्रू दे रहा है, बट ये हमारा दे रहा है फॉल्स। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। Same as it is if I am having not operator. If I am writing not of A, or not of true, anything I am writing not of A greater than 10, something like this. Now, what is the meaning of this? So basically, this means A value is 100. 100 is less than 10. Is 100 is less than 10. 100 जो है वो छोटा है 10 से, नहीं 100 छोटा नहीं है। तो क्या रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। फॉल्स का उल्टा कर देगा ये नॉट। नॉट का काम होता है अपोजिट कर देना। तो यहाँ पे फॉल्स का उल्टा क्या है? ट्रू। सो रिजल्ट क्या होगा? ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? सेम एज इट इज, मोर एग्जांपल इफ यू वांट, a is equal to 100, print a is greater than 10 and a is greater than 20 and 90 is greater than 100. So suppose that this is the, now what is my result in this case? Anybody take a guess what result we will get if I am running this code? क्या result है? Anybody take a guess? What is my result if I am going to execute this code? False. Okay. Everybody? Only one is false. You can give a try. Whether it is correct or not, that is fine. True. Okay. Anyone else who wants to give a try? Okay. See, this one is there. 100 is greater than 10. 100 जो है वो 10 से बड़ा है। हाँ, 100 10 से बड़ा है। तो ये तो हमारा ट्रू दे रहा है। ये हमारा ट्रू दे। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। 100 इज ग्रेटर देन 20। 100 जो है वो 20 से बड़ा है। हाँ, 100 20 से बड़ा है। तो आप पहले तो इसको इवेल्युएट, ट्रू एंड ट्रू, क्या रिजल्ट आ रहा है? ट्रू। सो यहां तक हमारा जो रिजल्ट है वो है ट्रू। अब यहाँ पे आ जाओ। 90 इज ग्रेटर देन 100। क्या 90 100 से बड़ा है? 90 100 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है फॉल्स। सो इन केस ऑफ एंड, अगर सारे ट्रू है तब ट्रू होगा, बट यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। सो एंड के केस में अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जा रही,
तो तुम्हारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही रहेगा. योर रिजल्ट विल बी फॉल्स ओनली. सी, if any one condition is false, your result will be false. Let me take one more example. A is equal to 10. Everybody, give a try. What is the result? What result we will get? Give a try. What is the result? Okay, true. And then let's see. 10 is greater than 10. 10 is greater than 10. Here, 10 is greater than 10. So if 10 is greater than 10, so here it will be false. So what is the meaning of this thing? This statement is returning false. Okay. Now after this, and a value is what? 10. 10 is greater than 20. 10 is not greater than 20. So here also it is false. After this, uh, calculate the AND operator for this. So what is the AND of these two things? False and false. What is your result? False is your result. So from here we are getting false. After this, OR operator is coming. 90 is greater than 100. 90 100 से बड़ा है, 90 100 से बड़ा नहीं है. तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जा रहा है? ठीक है. अब फॉल्स और फॉल्स का और जो होगा वो क्या होगा? वो होगा फॉल्स. ठीक है. अब यहाँ पे आ रहा है नॉट ऑफ. अब यहाँ पे क्या है? नॉट ऑफ ए. नॉट ऑफ ए लेस देन 10. और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है. यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाना. ठीक है. यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाना. एफ और नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन 150. सो ए वैल्यू क्या है? 10. 10 बड़ा है 150 से. 10 बड़ा नहीं है 150 से. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स दे रहा है. और फॉल्स का उल्टा कर देगा हमारा नॉट. फॉल्स का उल्टा कर देगा हमारा नॉट. तो फॉल्स का उल्टा क्या है? ट्रू. सो क्या रिजल्ट यहाँ पे आएगा? सो अब फॉल्स और ट्रू, अगर कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाती तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? ट्रू. सो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है हमारा? ट्रू. ठीक. ओवरऑल रिजल्ट क्या है? ट्रू. समझ आया? ओके. तो यहाँ पे एक एक करके लो. पहले इस कंडीशन को लिया, इस कंडीशन को इससे एवेल्युएट करो. जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको फिर 90 ग्रेटर देन 100 से करो. जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर आगे प्रोसीड. ऐसे तुमको आगे बढ़ो. ठीक है. So this is your logical operator. So basically this much of operators we are having in our Python programming. Other than this, there is one more operator. Let me discuss that as well. That is known as ternary operator. So basically ternary operator is your conditional operator. Okay. So conditional operator क्या होते हैं? अगर कोई कंडीशन हमको देनी है. कंडीशन मतलब कि कोई पर्सन जो है वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता. तब मैं डिसाइड करूंगा कि ये पर्सन जो है वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है. एनीबॉडी? क्या कंडीशन हमारी है कि कोई पर्सन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता? क्या कंडीशन होगी? क्या एलिजिबिलिटी है वोट के लिए? अगर वोटिंग करनी है तो क्या एलिजिबिलिटी है इंडिया में? Age 18 plus, correct. 18 plus is my age. So if age is greater than 18, then a person is eligible for. अगर एज जो है 18 से कम है तो पर्सन जो है वोट के लिए एलिजिबल नहीं. दैट इज. सो कब हम कह सकते हैं पर्सन एलिजिबल है? जब उसकी एज 18 से ज्यादा. अगर 18 से कम है तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं है. दैट इज मीन.
So what is the syntax here? Try to understand the syntax. Where is where is nothing but just variable, any variable it is. After this, expression one. When this expression one is going to be evaluated, here you can put if and after that condition. Now, whatever condition you have given, if this condition is true, then your result will be expression one. If whatever condition you have given here, if this condition is true, your result is expression. Otherwise, what is your result? Expression 2 is your result. So what it is doing? Expression 1, when expression 1, if the condition is, if this condition is true, then result will be expression. And if this condition is false, then your result will be expression. That is the thing. Please mute expression 1, if whatever condition is there, if this condition is true, your expression 1 is your result. If this condition is false, your expression 2 is your result. Conditions, you can easily make conditions with the help of ternary operator. Let me show you some example. Suppose that I want to write a code to check whether a person is eligible for vote or not. So Python program to check whether person is eligible for vote or not. That is a, so I want to write a code like this. Python program to check whether a person is eligible for vote or not. So condition you already know. So now what I will do, I will take age as an input. क्या मैं इनपुट ले रहा हूं? एज का इनपुट ले रहा हूं कि बताओ भाई तुम्हारी एज क्या है. Based on that age, I will decide whether that person is eligible for vote or not. So I am taking age in the form of integer. Enter your. So what this code will do? This code will simply use to take age as an input. Suppose that I am giving 12. 12 is what? 12 is your age. Okay. So अगर तुमको input देना है Python के अंदर तो हम इसके through दे सकते हैं. Input is my function. Along that, which kind of input you want? For age, integer type of input. Okay. That's why int input, enter your age. After that, next step is where is equal to what? Condition I am going to write. What is my condition? Eligible for when I can say a person is eligible for, we can say a person is eligible for vote if age value is greater than 18. अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है तब तो पर्सन एलिजिबल होगा वोट. अगर एज नहीं तो क्या होगा हमारा? पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट्स. And after this, if you want to print it, okay, like this, you can print value. See, I am going to run this. I am giving 12 as an age. क्या आ रहा है? पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं है वोट. अगर मैं दे रहा हूं समथिंग लाइक 21 में दे रहा हूं, पर्सन जो है वो एलिजिबल है. So in this, like this type of program, we can write with the help of ternary operator. Same as it is, if there is one more program, let me show you one more program. Anybody, just tell me what is the condition that I need to write. Python program to find the maximum of two numbers. To find maximum of two numbers. Anybody? Try maximum of two numbers. How we will get maximum of two numbers? So first thing is you need to take two numbers as an input. So how we will take two numbers? Num1 is equal to int input, same as above. Int input, enter first number, enter first number. Then second number, num is equal to int input, enter second. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? दो इनपुट ले रहा हूँ. ठीक है, कि पहला नंबर बताओ और दूसरा नंबर बताओ. ठीक है, ये मैंने किया. अब इसके बाद क्या है? मेरे को लिखनी पड़ेगी कंडीशन. क्या होगी कंडीशन?
अगर देखो नम वन कब ग्रेटर होगा, नम वन कब ग्रेटर होगा, नम वन तब ग्रेटर होगा जब नम वन की वैल्यू नम टू से बड़ी। तो ये हमारी पहली कंडीशन। अगर नम वन की वैल्यू नम टू से बड़ी है देन नम वन हमारा ग्रेटर, अदरवाइज क्या ग्रेटर है, एल्स। कौन सा ग्रेटर है, नम टू। अदरवाइज क्या ग्रेटर है, नम टू ग्रेटर। ठीक, दैट इज and what it is doing, it is checking whether two numbers are same or not, whether num1 and num2, which one is maximum out of these two numbers. So for that we are having this type of ternary, and you can use ternary operator for conditions. If you want to write any type of condition, you will use this kind of ternary. For example, let me print maximum number is, maximum number comma var. Now, first number I am giving 10, second number I am giving 20. Second number I am giving 20. See, maximum number is, now let me change. First I am giving 20, then I am giving 10. 20. Maximum number is. So in this way, you can write any type of. For example, if you want to write a code Python program to find uh, whether a number is odd or even, whether a number is odd or even. So Python program to find whether a number is odd or even, whether a number is odd or, so anybody just take a guess when I can say this, that is this number is divisible, and this कह सकता हूं कि कोई नंबर जो है वो डिविजिबल है या कोई नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है। कब मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर ऑड है या इवन है, किस केस में क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे भी मेरे को कंडीशन ही बनानी पड़ी। एनीबडी, व्हाट इज द कंडीशन? यस, द कंडीशन इज, देखो ऑड इवन हम कैसे चेक करते हैं, अगर हम नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर इवन। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए तब हम कहते हैं ये नंबर जो है ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यही फॉर्मेट हम लोग यूज। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बताया था, मॉडुलस सिंबल हमारे पास है जिससे हम फाइंड करते हैं। तो ये वाला मॉडल रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे, हम बस रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये इवन है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये दैट इज द, ओके। सो लेट मी शो where is equal number is even, when number is even, if num1 is greater than, num1 is greater than what, sorry, num1 modulus 2 is equal to, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, रिमाइंडर दे के देगा। जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इवन। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, नंबर जो है वो ऑड, एल्स नंबर इज, दैट्स जस्ट प्रिंट। सी, 10th number is, if I am giving something like some other, like 70, 70 number is this. Now in these codes, if any type of questions or doubt is there, please let me. Any type of doubt or questions is there, can you give? No Kamyani, we cannot give more than two conditions. Okay, only if and else. Okay, or other than this we can use and operator, that is acceptable. And or and not we can use. For example, let me take one more example. Python program, Python program, let me take one more example. Python program to check whether a given number, whether a given number is divisible by, is divisible by,
डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 और सो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमको एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि चेक करेगा जो भी हमारा नंबर है वो नंबर 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट। हम क्या करेंगे, पहले पहले तो नंबर एक ले लो इनपुट, ठीक। अब नंबर इनपुट लेने के बाद वैर इज इक्वल टू, वैर क्या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ये तुम्हारा काम है, कोई भी चीज हो सकती है। देखो, here I am going to write number is divisible by 2 and अब इसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ num1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा, ये जो कोड है ये 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा। हमारे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि हमको 3 की भी चेक करना। तो 3 की कैसे चेक करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे लॉजिकल लॉ जो कि है एंड, क्योंकि लॉजिकल क्या करता है, पहले ये कंडीशन देखेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करे तो ये आगे जाए। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, num1 मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0। सो क्या करेगा ये दोनों कंडीशन चेक कर, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, जो भी नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी divisible। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय। जी, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके कंडीशंस को अप्लाई कर सकते, नंबर इज नॉट डिविजिबल, ठीक है। इस एंड आफ्टर दिस वी जस्ट नीड टू प्रिंट, प्रिंट प्रिंट वैर, दैट्स ठीक। नंबर आई एम गिविंग समथिंग लाइक 6, 6 is divisible by 2 as well as 3, suppose that I am giving 9, I am giving 9, so 9 is not divisible by 3, so sorry 2, so not divisible by, so इस तरह से हम कंडीशंस लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ दो कंडीशन इफ एल्स लिख सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे नहीं लिख सकते इन केस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, इन केस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम वी कैन, एनी डाउट, क्लियर, फाइन, fine, after this your operators are complete. So after operators our next topic that we are going to discuss is control, कंट्रोल। सो कंट्रोल फ्लो क्या होता है, अभी तक जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उस कोड में क्या होगा, उस कोड में हमारा कोड स्टार्ट होगा पहली लाइन से, जाएगा आखिरी लाइन, इस तरह से फ्लो हमारा चल। बट अगर हमको ये फ्लो चेंज कर, देन आई एम गोइंग टू यूज कंट्रोल फ्लो स्टेट। तो नॉर्मल फ्लो जो है हमारा कोड का, हमको उस फ्लो को बदलना है, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 3 टाइप के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हो। पहला स्टेटमेंट बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दूसरा टाइप का स्टेटमेंट बोला जाता है रिपीटेटिव और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, और तीसरा टाइप का स्टेटमेंट जो बोला जाता है उसको बोलते हैं कंडीशनल, आइटरेटिव एंड ट्रांसिस्ट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्टेटमेंट हमारे होते हैं पाइथन प्रोग्राम में। अब पहला टाइप का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि इस कंडीशन के पे आप, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो होते हैं ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट विल डू, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हाँ नमन टेल मी। सर जो आपने ऊपर बताया है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, तो इसमें सर ये कैसे होगा कि सर ये तो 3 से डिविजिबल है ना, तो ये कब बताया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2, ऐसा कंडीशन कब उसके होगा लिए मल्टीपल मतलब। कंडीशंस हम लोग को यूज करनी पड़ेगी, वो मल्टीपल कंडीशंस इसके थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए हमको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर से मल्टीपल कंडीशंस नहीं लिखते, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन तुम एट अ टाइम ले सकते,
ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन एट अ टाइम लेने के लिए मैंने ये कंडीशन लिखी। ठीक है, अगर तुमको वो लिखना है कि ये डिविजिबल हो रहा है 2 से बट 3 से नहीं हो रहा, तो फिर तुमको कंट्रोल फ्लो कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करना। ठीक है, ओके। बाइनरी ऑपरेटर से नहीं कर सकते। Now, conditional statements. So, conditional statements are based on conditions. Condition. इसका मतलब क्या है? देख, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया, if tomorrow is if tomorrow is rainy day, if tomorrow is rainy, or you can say if tomorrow is rain, then I will not go to school. अगर कल रेन होती है तो मैं बारिश नहीं जाऊं। सेकंड केस क्या होगा कि बारिश नहीं, टुमारो इज नॉट विल। अगर बारिश हो जाती है तब तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, अगर बारिश नहीं होती है तो मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, अगर रेन होती है तो क्या कर रहा हूं मैं, तो मैं स्कूल नहीं जा, अगर बारिश नहीं होती है तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं स्कूल जा। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स का मतलब यही होता है कि अगर कोई कंडीशन हमको लगानी है अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इसका काम ही यही होता है कि जो हमारी कंडीशंस है, अगर ये सही हुआ तो हम स्कूल जाएंगे, अगर ये गलत हुआ तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। सिंपल, इसका मतलब ये होता है। तो सेम चीज प्रोग्रामिंग में हमारी होती है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि का these statements are used these statements are used to make decisions, to make decision। मैं एक कंडीशन लिखूंगा और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ, based on that condition I am going to do some work, based on that condition I am going to perform some task, that is your conditions। सो एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो मैं ये टास्क करूंगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स जाती तो मैं दूसरे टास्क पे चला जाऊंगा। दैट इज योर कंडीशन। ठीक है, और पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए, इन पाइथन फॉर कंडीशनल स्टेट, फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स वी आर हैविंग इफ, एलिफ एंड एल्स कीवर्ड। तो ये तीन कीवर्ड हमारे पास हैं जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट में काम आते। ये तीन स्टेटमेंट, इफ, एलिफ एंड, सिर्फ ये दो हमारे, सिर्फ ये तीन हमारे कीवर्ड है जिससे हम सारी कंडीशन लिख सकते। अब इसमें कुछ वेरिएशंस हो, वेरिएशंस ऑफ इफ, एलिफ एंड एल्स। क्या वेरिएशन है देख, पहला वेरिएशन कहता है अगर मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन, देन यू विल ओनली यूज इफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, साथ में एल्स यूज करूंगा, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मेरे पास दो से ज्यादा कंडीशन, सपोज दैट 5-10 कंडीशन हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है इफ, एलिफ, एल्स सिस्टम। और एक और वेरिएशन होता है, अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है उसके अंदर हमारी दूसरी कंडीशन भी हमको चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये 2-3 वाला कोड था, इसमें क्या था, पहले हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं, हमको ये भी लिखना है कि भाई 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा। सो दैट इज नोन एज नेस्टेड कंडीशनल स्टेट, सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, नेस्टेड इफ, एलिफ, एल्स स्टेट। कंडीशन के अंदर कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इफ, एलिफेंट, एल्स। अब क्या है, इसके बाद क्या है, अब ये स्टेटमेंट्स लिखते कैसे, समझो। पहला है हमारा इफ स्टेट। सो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, हम सिंपली लिखेंगे इफ क्या है, ये कीवर्ड, इसके बाद कंडीशन, जो भी कंडीशन तुमको चेक कराए वो लिखो, कोलन लगाओगे, इंटर हिट करोगे, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी कोड तुमको कराना है, जो भी टास्क कराना है हम वो लिखेंगे, लाइक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट। कमिंग टू स्टेटमेंट 3, मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं 3। तो स्टेटमेंट 3 कब एग्जीक्यूट हुआ, याद रखना,
अगर स्टेटमेंट 3 जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट, क्योंकि स्टेटमेंट 3 जो है वो पार्ट नहीं है हमारा इफ ब्लॉक का। इफ जो है ये ब्लॉक, तो ये जो स्पेस देख रहे हो इसको बोला जाता है इंडेंटेशन। क्या इंडेंटेशन रिफ्लेक्ट करता है? इंडेंटेशन ये चीज बताता है कि ये जो कोड हमने लिखा है ये इफ ब्लॉक के अंदर, ये जो हम कोड लिख रहे हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये हमारा इफ ब्लॉक के अंदर है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा इंडेंटेशन। ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इनको बोला जाता है इंडेंटेशन। अगर हम स्पेस नहीं देते, देखो मैंने स्टेटमेंट 3 में कोई स्पेस नहीं दिया है, तो ये जो है हमारा, इसका इफ से कोई मतलब नहीं। ये स्टेटमेंट 3 जो है ये हमेशा एग्जीक्यूट, ऑलवेज। लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ, देख मैं क्या करूंगा, एक नेम ले रहा हूं इनपुट, ठीक है, एक नेम ले रहा हूं इनपुट, एंटर, जो मैंने नेम एक इनपुट, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, मैं कंडीशन लूंगा, अगर नेम जो है वो मेरा नाम, दैट इज माइन, तो इफ नेम इज इक्वल टू प्रत्युष, व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट हाय गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, मैंने लिखा। अगर, और इसके बाद में एक इफ के बाहर आ रहा हूं, वहां पे मैंने लिखा थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइन समथिंग। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये इनपुट लेगा, तो जो भी मैं इनपुट पास होगा, सपोज दैट मैंने अंश दिया एज एन, मैं अंश दे रहा हूं एज एन, तो मैंने जब अंश इनपुट दिया, तो क्या हमारा नेम की वैल्यू अंश के बराबर है? नेम की वैल्यू अंश के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक जो है, ये जो इफ कंडीशन है ये फॉल्स आ जाएगी। और अगर इफ फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, डायरेक्टली ये सबसे नीचे आ जाएगा, ये कोड हमारा जो है, ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा इफ के अंदर जो भी कोड तुमने लिखा है वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं, इफ के अंदर जो कोड लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी, मैंने लिखा अंश, मैंने लिखा अंश, देख सीधा ये चीज एग्जीक्यूट हो जाए, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। ये जो इफ के अंदर कोड लिखा हुआ है ये नहीं रन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। जस्ट देख, मैं अपना नाम देखता हूँ समथिंग, ठीक है। अब इसी से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो ये नेम और ये नेम दोनों सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा हाय गुड इवनिंग एवरीवन, देन वी विल गेट थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, दैट इज अ हाय गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक्स एवरीवन फॉर। सो ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस को बोला जाता है इंडेंटेशन। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ इतना बताता है कि ये जो कोड है, ये ये जो कोड मैं लिख रहा हूं, ये लाइन का जो कोड मैं लिख रहा हूं, ये जो है ये इफ ब्लॉक के अंदर, ये जो है कोड है ये इफ ब्लॉक के अंदर है। इसका काम सिर्फ इतना ही, और कोई काम नहीं। Guys, please tell me this variation is clear or not. If questions is there, please let me know. हेलो। Yes, Sada. जी, ये इसमें जो आपने जब इसको एंटर करा, मतलब रन करा, तो ये प्रिंट जो आपने लिखा है हाय गुड इवनिंग एवरीवन और थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, तो अगर जैसे ये इफ ये अगर ये सही होता है, जैसे ये नाम, मतलब जो अपन टाइप करते हैं इंटर योर नेम, तो अगर वो सही टाइप करेंगे जिसका नेम इजिकल्स टू के बाद जो है, तो ये चीजें एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। और अगर ये नहीं होगा नाम, तो वो सिर्फ लास्ट वाली लाइन प्रिंट होगी, करेक्ट, थैंक यू एवरीवन। करेक्ट, करेक्ट। लास्ट वाली लाइन क्यों प्रिंट हो रही है? अगर ये कंडीशन फॉल्स है, लास्ट वाली लाइन इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया है। ये स्पेस का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ और स्पेस हम्म। दे के लिखता हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा, ये जो मैं कोड लिखूंगा इस लाइन पे, मैं स्पेस दे रहा हूँ, ये स्पेस का मतलब हो रहा है कि ये इफ के अंदर, ये इसका अच्छा। पार्ट है, ठीक है। ओके। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, देखो अब क्या होगा कि ये हाय भी प्रिंट हो जाए। हम्म। अगर मैं यहाँ पे इनपुट जो है प्रत्युष दे देता हूँ, तो ये हाय भी प्रिंट कर देगी, राइट। हम्म। और अगर मैं इसके बाहर आ जाता हूँ, कुछ लिखता हूँ, सपोज दैट हम्म। मैंने लिखा बाय,
तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो भी ये इफ ब्लॉक के अंदर कोड है वो नहीं चलेगा, बाहर का कोड चलेगा। सिर्फ बाहर का कोड क्या है, बाहर का कोड है हमारा ये। तो ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ something like सी। अब क्या होगा, ये दो लाइन हमारी चलेगी, अंदर अच्छा। का कोड नहीं। तो ये स्पेस बेसिकली ये चीज बताता है कि जो भी कोड हम स्पेस के साथ लिख रहे हैं वो पार्ट है इफ का। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन दी है वो ट्रू, तब तो ये पार्ट चलेगा, वरना ये पार्ट नहीं चलेगा। दैट इज। ओके, स्पेस नहीं होगी तो लास्ट वाला अगर फॉल्स होगा तो लास्ट वाला प्रिंट हाँ, होगा। यस। ओके, अगर मैं थैंक यू। स्पेस को बाहर कर देता हूं तब भी देखना ये हाई भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कंडीशन फॉल्स भी होती है, जैसे मैं अंश लिया और यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्रत्युष से, तो ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो कंडीशन हम्म। फॉल्स है तो ये हाई भी प्रिंट हो जाएगा। आ गया। ओके। ओके, व्हाट, थैंक यू। नेक्स्ट टॉप, या एनीबॉडी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो आप कोई भी डाउट हो कोई भी पूछ सकता हो, ठीक है। इसके बाद जो बाकी वेरिएशंस है वो हम लोग को डिस्कस करेंगे। सो इफ एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर, एनी क्वेश्चन यू गाइस वांट टू आस्क, यू कैन, related to complete Python programming. Okay, let me share this Colab notebook with everyone. You can refer this if you want. Any question, anything you guys want to ask, you can ask. Yeah, Raman, want to say something? No doubt. Okay. ओके, चलो इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इफ एल्स क्या करता है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इफ एल्स का। इफ एल्स क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तब मेरे को कुछ करना। अभी क्या हो रहा है, ये जो कोड लिखा हुआ है ये ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये जो कोड लिखा है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे को कुछ और कोड एग्जीक्यूट करा। तो उस केस में हम लोग एल्स का, एल्स क्या करता है, अगर तुम्हारी इफ के अंदर जो तुमने कंडीशन लिखी अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। और एल्स क्या है, एल्स भी इस तरह से ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम कोड ले रहा हूं, देखो क्या, और इस पूरे कोड को, जो ये कोड मैंने लिखा है, इस पूरे कोड को मैं एल्स के अंदर डाल दूं, तो अब क्या होगा समझ। अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तब तो ये कोड चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स चलेगा। एल्स क्या है, ये एल्स के अंदर जो कोड लिखा है वो चलेगा। अगर मैंने इसके बाहर कुछ लिख दिया, सपोज दैट मैंने लिखा नन, तो ये जो नन है ना ये हमेशा ही चलेगा। ये जो नन है ये हमेशा ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी, मैं चाहे कुछ भी लिखूं, मैंने लिखा अंश, ये वाला पार्ट एल्स वाला चल रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देखो हाय आया, थैंक्स एवरीवन आया, बाय आया, बट नन भी आया। नन हमेशा चल रहा है, क्यों, क्योंकि नन ना इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट, किसी का पार्ट नहीं है। तो ये तो हमारा नॉर्मल कोड है, तो ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूं समथिंग लाइक प्रत्युष, क्या होगा देखना। अब क्या होगा, हाय गुड इवनिंग एवरीवन, और तो ये अल्टरनेटिव होता है, जो एल्स होता है वो अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, अगर ये सही नहीं है तो ये सही, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमको ये कोड चला। देन वी आर हैविंग इफ एंड एल्स सिस्टम, दिस इज अ एक्शन। सो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट का अगर मैं बताऊं तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहां पे मैंने लिखा एल्स ब्लॉक, एल्स विद इन कोटेशन व्हाट एवर स्टेटमेंट, समथिंग दैट stmt4 stmt, यहां पे मैं लिखा हूं stmt6, ठीक है। अब क्या होगा समझिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब तो हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 2 चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स जाती है तो हमारा स्टेटमेंट 4 एंड 5 चलेगा। और जो स्टेटमेंट 6 है वो हमेशा ही चलेगा, स्टेटमेंट 6 जो है वो हमेशा ही चलेगा। दैट इज इन इफ एल्स। हाँ गाइस, एनी क्वेश्चन।
I will solve questions, okay? In next session, at the beginning itself, I will solve a lot of problems related to ifs. But till this point, if any question is there, any doubt is there, you can ask. हेलो। Yes, yes, go ahead. ठीक है सर, स्टेटमेंट 6 जो है वो मतलब ट्रू पे भी चलेगा, फॉल्स में भी चलेगा? हाँ, वो हमेशा चलेगा क्योंकि ये किसी का पार्ट नहीं है, ना ये इफ का है ना ये एल्स का। देखो एल्स कब चलेगा, जब इफ हमारा कंडीशन फॉल्स है। ये जो कंडीशन यहाँ दे रहा है, अगर ये फॉल्स ही तो एल्स चलेगा। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा इफ के अंदर जो कोड लिखा होगा वो चलेगा। बट ये जो पार्ट है, ये ना इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, तो ये तो हमेशा ही चलेगा। अच्छा, ओके। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। स्टेटमेंट 6 जो है वो इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये ओके। हमेशा ही चलेगा। दैट्स व्हाई इन एवरी केस वी आर गेटिंग नन एज एन एल्स। या नेक्स्ट डाउट, नो डाउट गाइस? Okay. So after this, we are having next thing. Guys, okay, no, fine. Now after this, the next thing is what? Next thing is if elif state. अब क्या हुआ? देखो दो चीजें हम लोग ने हैंडल की। अगर एक कंडीशन है और वो कंडीशन फॉल्स हो जाती तब तो हमारा एल्स चला। सपोज दैट मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन, मेरे पास 5 कंडीशन, तो हम इफ एलिफ एल्स का यूज करते हैं। बेसिकली इफ एलिफ एल्स का यूज तब करते हैं जब एक से ज्यादा हमारे पास कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल 5 कंडीशन है, बेस्ड ऑन 5 कंडीशन हमको सॉल्यूशन देना। ठीक है, तो हम लोग इफ एलिफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोड लिखना है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड और टू चेक whether a person is eligible for vote or not, whether a person is eligible for vote or not। ठीक है, एक छोटा सा कोड है, देख कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। क्या करेंगे हम? पहले तो एज इनपुट ले, तो इनपुट ले लो एज का। इंट इनपुट, एंटर योर एज, एंटर योर एज। इसके बाद क्या करेंगे? कंडीशन इफ जो भी एज है, अगर वो एज 18 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? पर्सन जो है वो एलिजिबल है वोट। सो प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एज जो है वो 18 से कम हो जाती है, तब हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, देख मैं लिख रहा हूं 21, 21 कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोट। व्हाई? बिकॉज ये कंडीशन हमारी ट्रू है। 21 जो है वो 18 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर जो कोड है वो हमारा एग्जिक्यूट। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं लिखता हूं समथिंग लाइक 12, अगर मैं लिखता हूं समथिंग लाइक 12, देखो क्या होगा। ये तो मैंने जस्ट, ठीक, मैंने लिखा 12। अब देखो क्या, candidate is eligible for, okay, so it is not eligible here in this. Okay, 12, see, candidate is not eligible for, because ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। अगर ये फॉल्स हुई तो तुम्हारा एल्स ब्लॉक चलेगा। तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हुए हैं ना टर्नरी ऑपरेटर में, सेम टाइप के क्वेश्चंस आप कंडीशनल स्टेटमेंट से कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन, तो ये तुम लोग सब लोग ट्राई करना। ठीक है, एवरीबडी गिव अ ट्राई, or else if you want let me show you some more questions। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स मैंने करा दिया है, लीप ईयर का कोड हम लोग लिख सकते। वोट एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, वेदर अ नंबर इज इवन और, ओके, गिवन नंबर इज इवन और ऑड। नाउ प्रिंट हेलो इफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है तो हेलो प्रिंट करो, वरना बाय। whether a person is eligible for vote or not। Now check whether the last digit of a number is divisible by 3 or not। ये भी हम कर सकते हैं इससे। तो ये सारे कोड हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। बट राइट नाउ यहां से ये जो हमारा कैंडिडेट एलिजिबल फॉर वोट, डिविजिबिलिटी और इवन, इस टाइप के कोड हम लोग इफ एल्स से कर सकते हैं। दैट इज इट। Now this is all about today। if you guys want to ask anything you can ask one by। हाँ,
हाँ guys, ask your questions one by one. If any doubt, anything you guys want to share, something you can say. हाँ guys, anything? You can unmute yourself and tell me if anything you want to say on this. Nothing, guys. Sir, Yeah. can you please share your PDF for practice? Questions, no? Yes. Yes, I will share that with you. WhatsApp. Okay, some problems I will share. Next. Okay, I don't think any doubt is there. So, sir, are you there? Yes, sir. Please tell me. Yeah, we can end up. Yeah. Can I wind up the session? Yes, we can. Okay. Thank you so much, sir. Have a nice day.